Step. In a suo motu inquiry undertaken by the collector under Section 47A of the Registration Act, the collector demanded additional stamps as payable by taking the value of the property as per collector's rates on the date of registration and refusing to allow the date of execution of the agreement of sale as the relevant date for determining the value of the property stop. The collector, while rejecting the plea of the petitioner that the value of the property was what was stated in the sale deed, which was in pursuance of a decree for specific performance, relied on the judgment of the Honorable Supreme Court in State of Rajasthan and others versus Messrs. Khandka Jain Dwellers 2008 Civil Court Cases 259 to hold that the valuation shall be taken only as on date of registration stop. The learned counsel argues that this court has consistently taken a view that whenever a decree is obtained for specific performance for sale of an immovable property, the value of the property as stated in the decree alone shall be treated as relevant and the collector's valuation as on date of registration is not relevant stop. He would also contended that the market value itself will be calculated only on the basis of what is struck as a bargain between parties and the collector's circle rate cannot afford such a basis stop. The council relies on the decision reported in Manoj Kumar versus State of Haryana and other 2008 Haryana Rent Reporter 46, where the division bench has held that a price given in the transfer deed in a decree for specific performance ought to be accepted by the registering authority without doubting the authenticity of sale consideration because the authenticity of decree passed by a court itself cannot be questioned. Stop. The reference to the judgment is inappropriate since the Honorable Supreme Court has expressly set aside the judgment and has held it do not lay down the correct law in state of Haryana and other versus Manoj Kumar 2010 Supreme Court cases 350 stop. The judgment emphatically lays down the effect of valuation as given in decree for specific performance cannot overrule the valuation as given in the circle rate stop. The judgment of the Supreme Court in State of Rajasthan case versus Messrs. Khandka Jain Jeweler Supra referred in the order of the collector above has laid down two important proposition the date which is relevant for determining the market value of the property is the date of registration and it is irrelevant that by the long pendency of litigation there is a long time gap between the consideration as stated in the agreement and the value as appreciated at the time of conclusion of court proceedings when the document is brought for registration stop. The Honorable Supreme Court was accepting the plea of the state that whatever may be the consideration for the vendor or the vendee, the state is entitled to collect its revenue on the basis of market rate at the time of registration as per Section 17 of the Registration Act. Stop. The arguments
which weighed with the Honorable Supreme Court is reflected in para 7 of the judgment stop, while expanding on the reasoning given for holding that the time of registration alone is relevant. The court culled out the entire section 47A and held as follows. Stop the contention of the learned counsel for the state that as per section 17 of the act, the market value has to be taken into consideration because section 17 stipulates that all the instruments chargeable with duty and executed by person of India shall be stamped before or at the time of execution. Stop. The word execution has been defined in section 2 of the act, which says that execution used with reference to the instruments mean signed and signature. Stop. Therefore, it shows that the document which is sought to be registered has to be signed by both the parties. Stop. Till that time, the document does not become an instrument for registration. Stop. A reading of section 2 with section 17 clearly contemplates that the document should be complete in all respects when both the parties should have signed it with regard to the transfer of the immovable property. Stop. It is irrelevant whether the matter had gone in for litigation. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।